Hey, very good morning, guys. I hope you all doing great. And it's 6:45 in the morning. It's Saturday, and I'm heading towards Kedareshwar. So ये जो जगह है यहाँ पे लॉर्ड शिवा का टेम्पल है एंड इट्स अराउंड 84 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। और आज मैं राइड कर रहा हूँ वर्सेस ग्रुप के साथ। आई हैव राजीव विथ मी एंड आशीष माइट जॉइन अस। सो फटक से चलते हैं यहाँ से। विल मीट अदर्स एट सीसीडी आम्बेगांव और वहाँ से फिर आगे चलेंगे। सो सी यू ऑन द रोड। So we have CCD somewhere here. And somebody is there already. Let's see. चले या रुकना है? गुड मॉर्निंग। और कौन आ रहा है? तीन ही है ना? निकले या रुकना है? निकले? ये जो वी आता है यहाँ पे कि आप उस साइड से आते हो, यू हैव दिस कामत हियर। आइदर यू कैन हैव इट देयर, बट वी लव मिसर, सो वी प्रेफर द मिसर पॉइंट हियर। So we generally eat it here. So this is the point, Bhairavnath Misal. We generally eat it here. Ashish had to go back to Pune क्योंकि कुछ मीटिंग था। he got a call और कुछ कंफ्यूजन की वजह से उसको याद नहीं रहा कि आज ही मीटिंग है। so he left for Pune from here. And me and Rajiv, two of us are heading towards Kedareshwar now. As soon as you cross the Khambatki Ghat, you'll find food stalls and all, and then you have to take first left. If you find, I'm not sure if you can see those windmills. Let's see what we got, क्योंकि first time मैंने ये place सुना है। हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए। क्या लाइन है विंडमिल्स की, क्या बात है। चलो इस साइड है। looks like we are going to have some off-road. Yes, it's Kedareshwar here.
So Kedareshwar यहाँ नीचे है. We'll first visit this side and then we'll go down. Look at this huge windmill. So finally we have reached here at Kedareshwar side. Kedareshwar temple is a little bit downside here. We have came up the hill and look at these huge windmills. These are amazing. I mean this is the second time I am enjoying windmills. पहले हम लोग गए थे कास पठार साइड जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट विंडमिल है. उसका भी वीडियो मैंने शूट किया था. I'll put the link in the description box. और उसके बाद ये जगह है. You have really big windmills. अगर आप दूर से देखते हो तो काफ़ी छोटा लगता है, but checking it from here it's kind of very huge. और not sure कि कैसे इंस्टॉल करते होंगे इतने बड़े विंडमिल को. Look at this. This is the one, and you have number of windmills in line this side. If you see at the top, plus this side also you have number of windmills. Amazing. So this is completely surrounded by windmills. Wow. So this is the other side. And we have more windmills here. The farms, the highway is also there, but you won't be able to see it from here through camera. Let's see if we can go there, the top. So अभी हम लोग other side जाने की try करेंगे. Let's see. We think we can go that side. So ये एक एडवांटेज होता है. Either you have a this is a sports tourer. This is not off-roader. So अगर आपके पास ऐसे ट्रायम्फ है या स्पोर्ट्स टूरर है, then कोई भी रोड हो, most of the roads they can cover. You have to be careful. What Rajiv is doing, that is called saddling. So if you have a rough road and you want to kind of give rest and less pain to your bumps, you can stand, you can saddle and ride. Look at it. Awesome, man. Oh. And we are here now.
came all the way from there, and even behind that, the first windmill, if you can see, extreme left. Somehow I feel even behind that there are more windmills, so we came from that side. You have the number of windmills here, and look at this. Look this one. Lovely. ये वाला है क्या? So here you'll have temple. You walk. Looks like this is a dead end, and from here we have to take a U-turn again. Yes. So this is a Lord Shiva's temple. Look at this, you have another set of windmill here, and this is the view from here. काफ़ी बढ़िया व्यू मिलता है, fresh air, and you have this line of windmills. पुणे यानी मेरे घर से कात्रज टू केदारेश्वर and back to the main road of this point. It's 97 kilometers so far. हमने एक ऑटो देखा ऊपर जाते टाइम, सो या पीपल आर टेकिंग ऑटो एंड एवरीथिंग अप. सो ये जगह ज़्यादा लोगों को पता नहीं है समहाउ, या काइंड ऑफ रोड ख़राब है ऊपर जाने के लिए, ऑफ रोड टाइप. सो दैट्स वाई नॉट मैनी पीपल आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस प्लेस, बट इफ़ यू विश इट इज़ अमेजिंग. सो चलो एक काम करते हैं, घर जाने के बाद बात करते हैं. अभी I'll see you at home. Bye bye. Hey guys, so finally back home. It's 12 o'clock in the afternoon, and we had amazing ride. It was 180 to 190 kilometers ride, and kind of off road है. So अगर आपको कुछ normal road से कुछ amazing करना है, कुछ tough करना है, then this is the place for you guys. And thanks to Rajiv, the place is amazing. And looking forward to have more rides with you. Please keep suggesting me such places. And बस बहुत ही बढ़िया था ये दिन. अभी देखते हैं क्या करना है, कुछ काम बढ़ गया है इस राइड के बाद, so I have to do that, but I'll get it done soon. So बस आज के लिए इतना ही रखते हैं. If you like this vlog, do hit subscribe button and also like the vlog and share with your friends. Bye bye.